Pakistan, Ahmedabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. जनाब अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम फैसल अली खान है और आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप हमें ऑनलाइन डिस्कशन भी हो रही है और आप लाइव हमें सुन भी रहे हैं FM 100 पाकिस्तान से जी। एंड दिस प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। और डिजिटल राइट्स फाउंडेशन इज अ रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन ICTs to support human rights, democracy, and digital governance, aim to empowering community, especially women and girls, through ICT education and positive development. So it's a brief intro that I have to read. Digital Rights Foundation launched Digital 50/50 is a feminist e-magazine. This is the main point. This is the main core of this program. Is 50/50 is a feminist e-magazine in 2020, which accepts submissions from Pakistan women writers and content creators in both Urdu and English. The idea behind launching Digital 50/50 is rooted in our organization goal to make online spaces safer and equal for women journalists and support them in providing reliable information to the public. And to ensure gender sensitive reporting and amplify women's voice, Digital 50/50 believes that the inclusion of women is a must in all roles, from content creators and editors to experts, sources, and subjects of stories and art. The aim is to make our magazine a source of ideas and opinions, art, and discourse on a wide array of topics in a digital rights arena from an intersectional feminist lens. The magazine aims to bust the gender stereotypes around news beats and provide women with the agency and freedom to pitch their stories and provide a voice to other women. So this is Digital Rights Foundation intro. And then today's our topic is personal is political. पर्सनल इज पॉलिटिकल क्या है, और मेरे साथ दो हमारे गेस्ट हैं जो जिनसे आपका हम तारुफ भी करवाएंगे, उनसे हम इस सेशन में बात भी करेंगे. So this is very important. और for those intellectual personals, for those like जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हमें हमारी बात सुनना चाहते हैं कि what is going on ऑनलाइन पे, और 50/50 जो है ये क्या काम कर रहे हैं, और जो ई मैगजीन है विच लॉन्च इन 2020, तो अब तक ये क्या काम हुआ है. सो मेरे साथ मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट हैं रबिया अरशद, जो कि फ्रीलांस यकीनन जर्नलिस्ट है और ऑनलाइन जर्नलिस्ट. मतलब हम देखते थे पहले ऑन मैगजीन जर्नलिस्ट होते थे और फिर वो बड़े आगे बढ़ रहे होते, लेकिन अब दुनिया ऐसी चेंज हो गई है कि ऑनलाइन जर्नलिस्ट जो है वो अपना काम करें. और रबिया के बारे में मैं बताऊं आपको, स्टार्टेड फ्रॉम प्रिंट मीडिया, एक्सपीरियंस इन रेडियो, ऑलराइट, रेडियो भी रही है, शी वाज अ ब्रॉडकास्टर, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, अ फिल्म मेकर आल्सो, ऑलराइट, लवली, एंड डिजिटल एंड मोजो ट्रेनी. ओ माय गॉड, लाइक कितना आपके साथ जो है वो एक एक चीजें आपके साथ सर्टिफिकेट्स जो है वो जुड़ गए हैं. दैट्स वेरी गुड. लाइक आई थॉरली अप्रिशिएट today's girls and women who are working for their rights and who are talking for the other women who are working around the world for their rights, because they don't know about the rights कि उनके rights हैं क्या. So today's topic is personal is political. So रबिया से शुरू करते हैं. रबिया, आप बताइए कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. और कैन यू हियर मी क्लियरली? Yes, I can hear you. ओके, दैट्स फाइन. लाइक अब मैं टॉपिक से ही अगर शुरू करूं तो ये तो DRF की एक कह लें कि बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने हम लोगों को टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उनको डिग आउट करने के हवाले से कहा, क्योंकि हमारे यहाँ फेमिनिज्म को तो वैसे ही बुरा समझा जाता है, हालांकि फेमिनिज्म की जो डीप रूट्स हैं उसमें यही है कि राइट्स के हवाले से बात करनी है. सफ्रेजेट मूवमेंट से हमें पता चलता है कि जी इवन ख़वातीन को वोट भी नहीं देने की इजाज़त थी. इजाज़त सिर्फ उन लोगों की थी जिनके पास ज़मीन थी, और उस वक़्त भी जो लोग ज़मीन की मलकियत रखते थे पुराने ज़मानों में, सिर्फ वो वोट दे सकते थे. वोट देने का मतलब सिर्फ हेड काउंट्स नहीं था, उस वक्त में अपने हक़ के लिए भी बात कर सकते थे. उसमें सिर्फ फिर मेल्स ही आते थे.
फिर कुछ मेल्स ऐसे भी थे जिनको अपनी बेटियां बहुत प्यारी थी उन्होंने जब उनको भी ज़मीनें दे दी, वो भी वो मलकियत बनाने लग उनके पास भी आ गई, बट वोट नहीं था। फिर उन्होंने वोट के लिए आवाज़ उठाई एंड देन फिर 1920 में जब हमने वोट के साथ-साथ ये वाला नारा भी हमारे सामने आया सेकंड वेव के बाद, जिसमें लिबरलिज़्म और उसके बाद फिर हम डिफरेंट आगे वेव्स देखते हैं जिसमें हमारे पास मॉडर्निज़्म भी आती है और लिबरल के बाद हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म भी आता है। तो पर्सनल इस पॉलिटिक्स में हमने देखा कि ख़वातीन या एक पर्सनल इंसान, कोई भी इंडिविजुअल इंसान है, उसकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ही एक्चुअली कैलकुलेट होके आगे जाकर एक चीज़ को हाईलाइट करते हैं। वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो सोल्यूशन भी हो सकती है, एनीथिंग कैन बी, बट उस पर्सनल को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। वो पर्सनल ही होता है जो कलेक्टिव पे जाके हेड काउंट या हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ चीज़ एनीथिंग बनता है। बट हम पर्सनल को जब अवॉइड करते हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, जिस तरह ख़वातीन के वोट से लेकर, वोट ना देने से लेकर के उनको जो मुलाजमत के हकूक़ हैं वो ना देने से, फिर आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया कि अगर वो शादीशुदा है तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी, अगर वो बच्चे रखती है तो उसको बिल्कुल ही, अगर ऑन जॉब भी है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है बट अनफॉर्चुनेटली उसका बच्चा या उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो बिल्कुल भी उसको जो है वो साल की छुट्टियां देना पसंद नहीं करेंगे, वो उसको निकाल बाहर फेंकना पसंद करेंगे। हमारे यहाँ बहुत एक जीनत नाम की खातून थी, जर्नलिस्ट थी, उनके साथ ये वाकया हुआ था। सो दैट इज द रीजन आई कोट हियर। या ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको बाकी ऑनलाइन मैगजीन और 50-50 में क्या फर्क लगता है? काइंडली मुझे इस बारे में बताइएगा। स्ट्रॉन्ग कंटेंट बेस्ड ऑन द थीम्स, जो कि थीम्स होते हैं वो एक्चुअली अगर हम वैसे देखें तो एक आर्टिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू को दे रहा होता है, तो जब हम थीम बेस्ड काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक ही इशू के ऊपर हमारे पास, जिस तरह हम नीश बेस्ड काम करते हैं तो डिफरेंट हमारे पास एंगल्स ऑफ स्टोरीज नज़र आते हैं, तो इसी तरह थीम के ऊपर जो है वो डिफरेंट एंगल्स हमारे सामने आते हैं जो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर सकते हैं बल्कि पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं उनको भी इसमें काफ़ी सर्वे के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू हेल्प मिल सकती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आई थिंक कि नीश बेस्ड और जो एक थीमेटिक बेस्ड ऑनलाइन बाकी उसके हवाले से जो DRF का मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है वो यही है। ओके जी, ऑलराइट ऑलराइट। चलें, साथ साथ हमारे साथ हमारे एक और गेस्ट भी हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर बिकॉज यस, सबा बानो मलिक हैं हमारे साथ, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं और आरजे एंड पर्सन ऑफ द इंटरनेट हैं। एंड आरजे, you're RJ still? You're RJ? Yeah, I have a show every weekend on 89. Sorry to shout out. All right. Yeah. So for the last 4 years in December, I'm sorry if it's loud where I am. I'm in office. I tried to find another place, but chalo. All right. So I want to ask you about the Digital Rights Foundation. Would you like to say something about Digital Rights Foundation? I'm a huge fan. In fact, the way I know Digital Rights Foundation is they actually helped me when I was being stalked, literally online. I had a cyber stalker for 1.5 years who was detailing my movements, and when I found out, and I reached out to Nigadad, I reached out to DRF, and they helped me deal with it and file a case, and from then I have been extremely loyal. So. All right. But come to the topic, like today's topic is personal is political. What is your idea about this topic? Like, what is personal is political? Well, I think for politics not to be personal ka matlab hai that you're privileged, because politics are what will, legally put you in a position that you cannot have rights, or you cannot succeed, or you cannot get ahead. And I also think that in a lot of ways they're sort of linked with your morals and who you are as a person. So it has to be personal, right? Because otherwise you can't think one way when you vote and the other way you're like, chalo, whatever. Because like who I am is who I am through and through. So for me, this is a phrase that is like very much a label that I'm proud to carry, that my personal and my politics are very much one and the same.
All right, all right. So tell me what you think about today's woman. What problem she's facing right now? Like, if this is totally like a personal in is political means. Like, what do you say about it? Well, every woman is obviously different. Okay, I'm sitting here, I'm speaking to you in English, I have a computer in front of me, so my problems are maybe not the same as another one's. But in Pakistan, you have problems across every socioeconomic class. But right now, if you look at, let's make it on the news right now. We just had a flood catastrophe, yes. And then climate change actually has very specific harms that happen to women. It is a human rights issue and a women's rights issue. In Pakistan, many women work in agriculture. Many women, are the ones that are manning that part of our country, and how that impacts them and what are the rights for them. So for women, you're talking about labor rights, you're talking about climate change, you're talking about reproductive rights across Pakistan, across socioeconomic reproductive rights are an issue. Just being seen as human beings, I would say, collectively across the board, that tends to be a problem. So yeah, going to All right. school, that's another Hmm. one, maybe. Sometimes kids aren't allowed to go to school because they're girls. Hmm. I wish that would stop. That's a big problem. So yeah. Tell me, who do you think is more talkative? आदमी ज्यादा talkative होता है या खवातीन ज्यादा talkative होती हैं? ये मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है. I think that if a woman is talking, you can almost guarantee that a man will try to talk over her. I think Rabia can probably agree. I'm literally fighting one right now. And if you tell a man, oh, these are women's problems, they'll be like, no, let me tell you women's problems. And I'm like, you are one of our problems. So, yeah. But I'll let Rabia answer. Rabia, your thought. Agreed, 100% agreed. Every human have this quality. No way कि अगर कोई introvert है, extrovert है, ambivert है. Even a person got a chance and they have the interestable topic, then वो बंदा है, बंदी है, वो बोलेगा. आप उसको सही. stop नहीं कर सकते. It's अच्छा, मैंने totally सवाल depend on the person. बिल्कुल सही. मैंने सवाल क्योंकि इसलिए लाइटर मोड मैंने इसलिए सवाल ये किया है क्योंकि बिकॉज जो हम राइट्स की जब बात करते हैं, वुमेन्स की हम जब बात करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो है ना वर्बल जो है ना होना चाहिए. उनको अपनी जो चीज को बयान करने में, अपनी बात को लोगों को करने के लिए बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, for sure. Oh, no, please, Rabia, you go. ये रबिया, देन फिर उसके आपसे बात सबा, देन यू. यस रबिया. ओके. इसमें मैं यही चीज़ कहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि लड़कियों को कभी भी, जैसा अभी सबा ने कहा कि मेरे पास इंटरनेट है और ये मेरे पास एक प्रिविलेज है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, जैसा मेरा बहुत सारे ऐसी सवाबी की और मर्दान की लड़कियों से जब मेरी मुलाकात हुई, तो देन आई रियलाइज़ कि वो अपने इस बात के लिए कि वो दूसरे शहर में अकेले जाएं, वो उसके लिए भी नहीं बात कर सकती. तो अपने हवाले से कि भाई वो नाश्ते में क्या खाएंगी या ये कपड़े पहनेंगी, वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाती. इवन उनको अपनी माँ के साथ बात करने में इतना प्रॉब्लम होता है कि अगर वो अपनी माँ के सामने कहें कि जी मुझे ये चीज़ नहीं, सिर्फ ये चीज़ चाहिए, या मैंने आज ये खाना नहीं खाना, तो उसकी माँ लिटरली उसको इतना मारती है कि वो उसको नेक्स्ट टाइम बोलने की हिम्मत नहीं होती है. तो जहाँ फिर ऐसी ओबियसली हम शहर के लोग बहुत उस हवाले से प्रिविलेज होते. ये नहीं कि हमें नहीं मार पड़ती, बट जो वहाँ पर है कि वो मार खाने के बाद उनके पास एक्सपोजर नहीं होता, घर के अंदर भी नहीं होता, बाहर भी नहीं बोल सकते, तो वो एक ऐसी चीज जनरेट हो रही है कि जो आप जनरेशन टू जनरेशन एक तरह से वो सफोकेशन जो है वो ट्रैवल कर रही है, जो ट्रॉमा किसी लेवल पे बन के फट सकता है. That's it. ऑल राइट. बिल्कुल सही. बिल्कुल. योर थॉट अबाउट दिस सबा? Sorry, can you repeat the question? I was lost in Rabia's words. मेरा क्वेश्चन यही था कि जो प्रॉब्लम जिस वक्त जो फेस जो कर रही हैं खवातीन, उसमें जैसे उन्होंने कहा कि हम गांव में चले जाते हैं या रूरल एरियाज में चले जाते हैं, वहां पे शहरों में एक अलग सिचुएशन होती है, बट प्रॉब्लम्स वहां पे भी जो है ना, प्रॉब्लम्स खवातीन वहां पे फेस कर रही हैं अभी. लाइक अभी प्रॉपरली इस चीज को रिजॉल्व नहीं हुई चीजें. Oh no, and I mean, the thing is you were saying like who talks more or whatever, and the thing is that there are women, right, who come out and they talk. Whether you look at Digital 50/50, the magazine in itself is like women coming out and being like, hello, there are problems. You have, the march that happens. You have women who come out on panels and they speak, but when we speak, we're often met with a lot of
please shut up, don't talk, we don't want to hear this, things like this. They don't believe that there's this idea that it's not real, because if you don't personally witness it, and there's also in Pakistan, in my opinion, like, you may believe in your household that, okay, my sisters go to school, we are liberal, we have done it, we are the ones, number one, but they can never marry who they want. Or like she was saying, like, I don't think even in liberal or more socioeconomically high, whatever you want to look at it, we're not encouraged to speak up, right? Like, one thing in Pakistan is, even for boys, I feel that when you speak up, there is a bit of like, you better conform and you better understand this is our family, this is the way we think, this is our culture, whatever. So I do think that, yes, there's probably even more people who want to raise their voices, but when you see women who do talk get like annihilated on social media, and they're put down and they're torn apart, or you see, like Rabia was saying, like, you take that risk one time and then, you're beaten, like, you're going to stop because you don't want to be one. I know that when the march happens every year, I'll get so many DMs from young girls who are like, I feel so bad, I can't come, but I'm there in spirit. And I'm like, the fact that you even want to come is power in itself. And then aage jaake, you'll see one day you'll get there, like, I'll drive you there myself one day. But yeah, I hope I answered your question. I went on another spiel, but yeah. Even, all right. I just want to add one thing, that yes, please. पार्टिसिपेंट थी जो औरत मार्च में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, तो उनके साथ लिटरली ये हुआ कि वो अपनी गाड़ी चूंकि खुद चलाती थी, तो वो चला के औरत मार्च में चूंकि उनकी फोटोज आ गई, तो जिस तरह ये औरत मार्च को उस वक्त ज़्यादा लाइमलाइट मिली जब इन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अदरवाइज तो इस तरह के मार्चेस हर साल जो है वो करते होते थे वैफ वाले, लेकिन जब उसको उस चीज़ को सामने आई, फिर इसको सेटल करने में अब लोगों को पर्सनलिस्ट पॉलिटिक्स के हवाले से जब मैंने एक सोशियोलॉजिस्ट को भी पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये नारा सिर्फ ये था कि जी हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए, और ये उन लोगों का नहीं था जो उधर बात कर रहे थे। अब वो जो बंदी जो खुद ड्राइव करके जा रही थी, उसके सामने लोग आ गए कि लो जी तुम्हारी जिस्म तुम्हारा मर्जी और हमारी गाड़ी हमारा मर्जी। उन्होंने उसको बहुत टीज किया, लिटरली बहुत टीज किया। और बल्कि एक दफ़ा वो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी, तो एक लड़के ने उसका बाजू पकड़ लिया। अब वो तो ओबियसली फैमिली थी वहाँ पे, तो मामला और उस तरह से गड़बड़ होके ख़राब होके सेटल डाउन हो गया। बट आप ये देखें कि अगर एक खातून एक दफ़ा, चलो जो उसने अपने घर वालों को नहीं इंसिडेंट बताया, वो तो उन्होंने उसको रोका नहीं, लेकिन जब फैमिली के सामने ये चीज़ हुई, देन उसकी फैमिली ने भी उसको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। हालांकि दे आर ऑल लिबरल एजुकेटेड, और कभी उसकी माँ ने, बल्कि उसकी माँ ही थी जो उसके पीछे खड़ी होती थी, लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि बेटा इज्जत सबसे प्यारी होती है। So this is the reason कि कौन बोले। Yes, I'll also add that please, the last few years, last year, the year before, I think 2021, if you watched Islamabad Aurat Azadi March, I was at the front banging the drum like I was having a blast. Because I moved to Karachi this year, my parents requested me that since we are not there, please do not go and attend this march alone, because of how much hate and vitriol you get afterwards, because they're like, you're by yourself, and if anyone takes it further than the online bashing, then what? And I actually listened to them. Normally I'd be like, whatever, I'm going. But this time I was like, I don't know, because I don't, the gundas in Islamabad, I know how to handle here. I'm not so sure. So yeah. All right. So today's topic is personal is political. मुझे ये बताइएगा रबिया, आप क्यों समझती हैं कि हर शख्स सिंध को जो है पर्सनल इज पॉलिटिकल होना चाहिए? इसको होना चाहिए या वो है, मैं तो दोनों ही समझती हूँ, बट हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। हमारे मजदूर को पता है कि उसके राइट्स हैं, उसको रोटी के लिए पैसा चाहिए, उसको ये चाहिए, बट ऑब्वियसली वो जब वोट देते हुए जब खुद से 5,000 के बदले किसी को ठप्पा लगा देता है, तो उसको अपने उस वोट की पावर नहीं पता है। दैट इज द रीजन वो ये समझ ही नहीं पाता है। औरतें भी इसी तरह समझ ही नहीं पाती हैं कि बच्चे पैदा कर लेना है जो है वो कुदरत ने अगर उसको ये तोहफा दिया है, तो वो उस तोहफे को ठीक तरह से इस्तेमाल करे, उतने ही बच्चे पैदा करे जितने कि वो उनको सही से टाइम दे सके। अक्सर आपने देखा होगा बड़ा बहन भाई कहता है जी मुझे सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया, बाकी बच्चों को ज्यादा दिया गया अटेंशन, फिर सबसे छोटे वाला और कभी दरमियान वाला। हमारी जितनी भी आप मिडिल क्लास फैमिलीज या जिनके भी 5-6 बहन भाई हैं, आप उनको सर्वे करा लें,
کہ وہ آپ کو ان میں سے 3 بچے روتے ہوئے ہی ملیں گے جی ہمیں اماں ابا نے پراپر اٹینشن نہیں دی. دا ریزن اوبیسلی جہاں جس سوسائٹی یا جس جگہ پر بھی آپ ہوتے ہیں انڈیویجول کی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے تبھی آپ اس کی جو ہے وہ ایک پراپر پرورش کر پاتے ہیں. اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے انڈیویجول پالیٹکس سے, انڈیویجول پرسنل ایشوز سے, کہ میرا ایشو ہے کہ جی میں چونکہ گھر پہ کام کر رہی ہوں تو میرے بچے کس طرح سے رہیں گے, میں جاب کیسے کروں گی, میں اگر ان میرڈ ہوں تو میں کیسے رہوں گی. پرانے زمانے میں بھی ان میرڈ خواتین ہوتی تھیں بٹ اس وقت تو کوئی اس کو اتنا پروپیگنڈا نہیں بناتا تھا. لیکن اب چونکہ میڈیا کی وجہ سے ہم سارے لوگ گلوبل ولیج ہونے کے ناطے, ابھی ایک اور چیز ہے کہ ہمارے مولوی صاحبان اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم ایک گلوبل ولیج بن چکے ہوئے ہیں. کم آؤٹ آف دیٹ تھنگس, لیکن وہ اسے بالکل بھی اپنے اس شیل کو توڑنا ہی نہیں چاہتے. تو ہمیں پرسنل چیزیں جب تک کہ جی مجھے یہ مسئلہ, آپ دیکھیں مہنگائی کی بات ہوئی تو اب جا کے ایک رپورٹر جو ہے وہ ایک بندے سے جا کے پوچھتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پیٹرول کا مسئلہ ہے, میرے بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے, جس کے بچے نہیں ہیں اس کو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, جس کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اس کو جاب کا مسئلہ ہے. اتنے زیادہ لوگ پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہیں وہ ہمارے یہاں بے روزگار ہیں. تو کیا یار ہم کیا دے رہے ہیں اپنی نئی جنریشن کو؟ ہم نے ان کو ٹیگس تو دے دیا, ملینئرز ہیں جی, جین زی ہے, جین ایکس ہے, جین ایکس 1 ہے, 1 2, بٹ اس کے علاوہ کیا دے رہے ہیں؟ دے ڈونٹ ہیو اینی, ان کے پاس کوئی فیلڈ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں جی ہمارے پاس, چونکہ ہم کہاں جا کے باہر کھیلیں اسی لیے ہم آن لائن گیمز کھیلتے ہیں. آن لائن گیمز کے کیا نقصانات ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی تک 18 قتل ہو چکے ہیں پاکستان میں اپروکسیمیٹلی. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ دیٹ, جو میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, بٹ میں نے جتنے کیسز ابھی تک دیکھے ہیں اس میں 12 سے 18 کیسز جو ہیں وہ پوری دنیا میں اس طرح سے ہو چکے ہیں, کہ جس میں فیملی والے فرسٹ آف آل ٹارگیٹ تھے. ابھی لائک اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پرسنل میں پھر گھوم پھر کے بات وہی آتی ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ جی 10 لوگوں کا ایشو ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انڈیویجول بندہ اگر کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر پرابلم ہے, میرے گھر کے باہر کوڑا ہے, میری سانس بند ہو رہی ہے گندی ہوا کی وجہ سے, ہم اس کو نہیں سنیں گے تو وہ پھر پرابلمٹک ہی بنے گا نا, کیونکہ وہ ایک بندے کو نہیں, ایک بندے کو ہے جو وہ بول سکتا ہے, اور اگر جو بندہ نہیں بول سکتا وہ اس کی بھی ریپرزینٹیشن کرے, بٹ وی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. اوکے, all right. اچھا مجھے صبا آپ یہ بتائیے, بیکاز you're an RJ اور ایک پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے from where you can guide people, you can talk to them, you can ask them, women are very important, like do you think کہ آج کل کی جو خواتین ہیں including you, do you know your rights? What are the rights of women? I think I know for the most part, but I do also want to say I have extreme privilege. You know, my rights are not something I have to check because they're not being held for me. I mean, the right to feel safe as a person perhaps is one that I wish was more readily available. But for the most part, I do. For the most part, if women do not know the like written down, ye mere rights hai, this is what Pakistan gives me, this is what Islam gives me, I do think they know when something for the most part is not right. I think they know when something doesn't feel right. I remember being as young as 9 years old and looking around my family, extended family, and thinking that the way girls are being addressed and treated, something is not adding up here. And like when you can visibly see that there is a difference in the way you're treated based on your gender and how safe you feel, I think one thing people, like when people doubt women fighting for our rights, or you know, girls fighting for their rights, is I don't think they understand that every day we step out of the house, even when we're online, so we don't even have to leave the house, we feel incredibly unsafe, right? And that is something that we know we have a right to not feel this way, that we can also go outside of our door. But yeah, so I mean, yes, I know them. Will I be able to recite them to you? No, but I also am lucky enough that that's not the case for me. However, for other women, there is the ability to be like, you know what, you don't have to go through this. Maybe again, they might not know the legalities. Sorry, I'm repeating myself, but they know what doesn't feel right. I think, maybe Rabia would agree, but like I believe that, and I believe there's a reason you see so many young people coming out and marching and things like that. I'm talking elementary school kids even, because they're like, something here is not adding up, and this cannot be the Pakistan that we believe in. Like truly, I mean, Pakistanis really love this country, so it's very confusing when it's like, why doesn't the country love me back?
And then when you actually get into it, you're like, oh wait, I do have rights. And people are supposed to listen to me, but it's not always, it's being taken away from us by powers that shouldn't even have those powers, you know? Like, it's so, yeah. All right, tell me, it's only in Pakistan that women are like fighting against their rights, they want their rights. It's like it's all over the world. It's happening. Absolutely all over the world. This is one thing that people will be like, well, if you don't like it in Pakistan, then get out of here. And I'm like, every country, of course, has its own problems, but you also have to look at the fact that just because something is going bad in America doesn't mean that I should just be like, I should just be grateful, right? Like, oh, my neighbor's kitchen lit on fire, mine doesn't work, but at least it's not burnt. That doesn't make any sense. Well, let me include one thing one should know if he is a woman or a man, because what is wrong and what is right. Yeah. We have to know. We do have to know, but see, then again, it's kind of different, right? Because in my house, something might be absolutely right. There's no question about it being right. In your house, it might be like, oh no, that is wrong. So really it has to be about, I think it has to be about viewing women and girls as human beings first, before they are women, before they are girls. They're just people, insan, literally, like everyone else. I think that would be a great first step. बिल्कुल बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबा आपसे मेरा कि why is anger in women seen as a bad thing? Sorry, we didn't start laughing because I am always angry. It's seen as a bad thing, like anything remotely. Like, women are supposed to be quiet, obedient, subservient, and just grateful to be there. Like, you're breathing, be happy about it. And I know that sounds extreme, but it's not. It's truly, the mentality is, hey, you're alive, so shut up. Literally. Yeah. Sorry, that's the second time I said shut up on this. Yeah. Agree to Sabha. I just want to add here कि जैसे gender disinformation में ना हमें ये चीज़ पता चली कि अगर खातून गुस्सा करती है तो वो बदतमीज़, बददिमाग, बदमिजाज और इस तरह से, लेकिन जब वही एक मर्द ऑफिसर उस तरह से गुस्सा करता है तो लोग उसको कहते हैं ये डिसिप्लिन्ड है, इसलिए इस तरह से देखता है, और अगर ये गुस्सा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, देयर इज़ नो कि वो अक्लमंद है, वो ज़्यादा अच्छे से है. और जब अभी हम देख रहे थे ना कि जैसा अभी सबा ने जिक्र किया कि कैटास्ट्रॉफी में किस तरह से सैलाब आने में हमें देखा कि जो एक खातून थी नौशहरा के इलाके की जिन्होंने खुद जा कर के एसी ने जा कर के हर जगह से लोगों को निकाला डंडे लगा. तो अभी जब हम ये चीज़ देखते हैं और जो मैंने अपने आर्टिकल में लोगों से व्यूज़ लिए तो मुझे लगा कि हम लोग जो हैं वो अभी तक, अच्छा यहाँ पे मैं कोट करूँगी, अमेरिका की एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी कि लायर्स वी स्पोक टू आवर चिल्ड्रन. उसमें उन्होंने अपने बच्चों को जितनी भी बातें, जो झूठी कहानियां, जिस तरह के जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इंग्लैंड में आए थे, एवरीवन नो उसको, वो कभी नहीं गए वहाँ पे, तो ये इस तरह की पॉइंट्स उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ फॉर द मॉरल थिंग्स हैं, कि आपको पता चले कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ये होती हैं, ये आपको एक सुकून देती हैं. तो हम वही वाले कैलिबर और वही वाली जो चीज़ें हैं ना वो हमारे यहाँ भी हैं कि हमने यहाँ के लोकल जो हीरोज है ना उनको मार दिया हुआ है और एक कहानियाँ बनाई हुई हैं कि जी फलां बहुत अच्छा है, फलां बहुत चीज़ है, फलां बहुत चीज़ है, एंड दैट्स यही चीज़ें जो हैं वो फिर आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि बंदा गुस्सा करे तो बहादुर है, दलेर है, जर्नैल है, फलाना है, औरत गुस्सा करे तो बदतमीज है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये है वो है. These are the things actually जो हमें ख़त्म करनी है. और जहाँ पे आपने कहा था ना कि पाकिस्तान के अलावा भी मूवमेंट्स हैं, तो मिस्र में भी हैं, अरब में भी हैं, और सफरेजेट मूवमेंट जो थी वो इंग्लैंड में थी, फ्रांस में थी, तो ये पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी थी. मैं आपको वही कह रही हूँ कि बहुत सारी इस तरह की, क्योंकि लिबरलिज्म के बाद रेडिकलिज्म और फिर अब पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये मूवमेंट्स चलती ही रही हैं वुमेन राइट्स की. और वुमेन राइट्स ये नहीं है, दे आर इक्वल टू ह्यूमन राइट्स, दे आर एक्चुअली ह्यूमन राइट्स कि अपने लिए आवाज़ उठाएं. दैट्स इट. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे जी बिल्कुल, आप दोनों से मेरा ये भी एक क्वेश्चन है कि ये जो ये जो एक शऊर है इसको उजागर करने के लिए गैर सरकारी तंजीमें या गवर्नमेंट उसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, ये क्वेश्चन आप दोनों से. Well,
I'm smiling. I just want to talk about anger again because the article I Acha, wrote for 50 you're for still angry? 50 I'm staying angry. I'm pretty sure I will die angry. I wrote in Digital 50/50. My article was like, I Yes, am yes, yes, angry, yes. right? So I just want to point out, basically, building off what Rabia said, that if you watch any news channel in Pakistan any night, you will see men who we hold in high regard, or maybe not so high regard in this country, on shows screaming their heads off. I mean, saliva is flying. People are holding their ears. It is embarrassing, frankly. It is a clown show. Nobody's like, oh, these angry, emotional men. But like one woman calls out for her own rights, and it's like, lady, get a grip. Immediate. And women are too emotional. Women are too emotional. I always tell Pakistanis, turn on any channel, go to any politician's Twitter account who is a man in this country, and you will wonder, what is your barometer for emotional? Because I think for women, it's just like us smiling is like taking it too far. But for men, it's screaming and yelling. So yeah, I just wanted to point that out. And sorry, your question? Like I'm talking about like what can government do or Government like do. Well, I mean, I'm saying this on air, so I don't know, God be with me, but probably be less honestly anti-women in their stances. And I know every political party is guilty of it in some way or another. I think you win very easy points by bringing in like control of women in some way or form. And I think bringing shame into the equation when that doesn't belong in law, in my opinion, like what should we be ashamed of? Because like I said, everyone's household is different. And I don't think it's up to the government to uphold anyone's home's like morality outside of the basics. Like, hey, it would be great if you don't kill anyone, you know? So we come to wind up, like final thoughts from both of you, ladies, one by one. ओके मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट और एनजीओ तो अपना है ऑलरेडी पहले से ही काम कर रही हैं. गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब कॉलेजेस एंड स्कूल्स में ज़्यादातर मस्ट कर दें कि बच्चों को लेक्चर्स दिए जाएं साइबर हैरेसमेंट के हवाले से, और पर्सनलिस्ट पॉलिटिक्स अगर वो नहीं करा सकते तो एटलीस्ट उनको ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो पहले 10 चैप्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके साथ वो डिबेट या डिस्कशन ज़रूर करें. थैंक यू. Alright, thank you. Yes, what about you, Sabah? I won't be as eloquent. I'm just going to say, stay angry. You have every right to question anyone who stops your rights. As long as you can do it safely, you have me, Rabia, and everyone else's support. I promise you. Stay mad. Right, thank you very much, Ji, because today's topic is like personal is political, and one should I should like say one thing. This Khawateen is very like for me is very respectable. You both ladies are very respectable. All the ladies work like for their rights in Pakistan and around the world. Like hats off to all the ladies out there, including my wife, my mother. Everybody, all the girls who are working like in a village, or working in a city, wherever around the world. So thank you very much. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. So nice meeting you both. Take care, ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.